operating through more than 30 partner outlets, working closely with universities, institutions, enterprises, and government bodies to make quality education more accessible across India. Its scale reflects this evolution. Fusion Classroom today has over 6 lakh registered users, more than 2 lakh paid subscribers, and a growing library of 100 plus courses comprising over 3,300 hours of proprietary learning content. As education enters an AI first era, the company is preparing for the next phase of growth by investing in technology, AI and ML model development, cloud infrastructure, content creation, AI and ML labs, marketing initiatives, and strategic expansion, while also strengthening its balance sheet through repayment of borrowings. It is therefore our privilege at Narnolia Financial Services Limited to partner with Fusion Classroom EdTech on the important milestone. I will take you through the company issue details later. Today is not merely about announcing an IPO. It is about introducing a company that believes India's demographic dividend can only become an economic dividend when quality education, technology, and employability come together. With that, I would like to welcome the management of Fusion Classroom Education to share their vision for the company and the exciting journey that lies ahead. Since we train students, we train in a hybrid mode, that is online as well as offline. In terms of our online delivery of our training program, it is done through our education OTT app, which is Classroom Education OTT, where we have currently 100 plus courses and we have 3,300 hours of learning content. All this learning content are HD learning content. A learner or a student can just log into our app and at a very affordable pricing of around 1,250 per year, a learner can learn of whatever he wants. The best part about this app is that it is one subscription and you get an access to the entire course content. That is for a year. Now imagine you get an entire course content every single week, every single month. There are new courses which are uploaded on an app and a learner gets a benefit of that. That is our online mode of delivery. We are currently present across the nation where we have 6 lakh plus total registered users on our platform with around 2 lakh plus paid subscribers of our platform. In terms of our offline delivery, we do it through our partner centers. We have 30 plus partner centers currently present in Bombay for academics as well as skills. As we go ahead, our business model also has wide range of customer base. We have enterprise clients, we have institutional clients, we have B2B clients, we have channel partners, we work with government projects, we have universities, we have direct B2C clients who work with us, we have a specific set of revenue coming from NGO, trust and foundation partners. As we say, currently we have around 5 skill centers here in Bombay and 25 partner coaching centers. Much for making to this event. And before we start what Classroom is about, it is important to understand the people behind it. So we are family entrepreneurs, familypreneurs, all have been in education industry for quite some time. My mom, Malka Javeriji, who is on podium, she has been an educationalist for almost 40 years. I have completed 21 years of teaching. So I started back in second year of engineering. Dumil has almost 18 years of teaching experience. So while I was in engineering, second year of engineering, I kept on doing the part-time along with my studies. After the graduation, I took a little different path. Basically, I went on to do a corporate job. I worked in 11 years in IT and financial IT services, including a couple of years abroad. 2007, I was in Netherlands, and Dumil was just graduating back then from engineering again. So my mom had a vision to give an educational, affordable education to the students, and she decided to found a hyper-local coaching class, local coaching classes, which would serve 8 to 12 and competitive examinations. So Dumil immediately, even despite any placements, he said, I will join the family business and we will grow this business from the scratch, where we started with only 5 students in a single area.
So at peak we were 300 students. We ran that profitable venture for almost 10 long years. After while I was working in corporate, I was still a part-time weekend teacher because it was a family business. I used to spend 8 hours inside the classroom on Saturdays and Sundays teaching entire syllabus. In 2016, there was a time that 10 saal nikal gaye. Now it is a time that we have to expand. So how do we expand? So in coaching, it was very evident that you just put physical branches, but we did not wanted to replicate a model where we keep on adding the branches. In fact, we wanted to use a tech-enabled, hyper-scalable model that would reach every corner of India, and that too very soon. And I come from a tech background because I've worked for 10 years. We decided that tech and academic come together, and that was a time when 2016 Classroom was born with a vision of having a hybrid model, which is hyper-local in nature and also nationwide. So hybrid was a term that people even didn't recognize back in 2016. So we always believe that online and offline world of learning will coexist together because offline gives personal touch, but online gives you the flexibility. So combining these two, the scalable model can be created, and that has been our journey. Fast forward 26, when we look across all those years that we have spent, we've seen the pre-COVID, COVID and post-COVID era of education completely different from each other. That actually helped us survive the tide and also pivot the model as per the needs. So Dhumil will take you through the entire. We'll be opening the bid for Anchor on the 30th of this month, and basically fresh issue of 19,18,400 shares. We have a small OFS, so there have been investors, but they have not come up. So there is a small portion which is going to the promoters, and a small selling shareholding is there. So the issue breakup is about 31.5 crores will go to the company, and the remaining of 7.5 crores will go through OFS. So the total issue size at 159 rupees is about 39 crores. Anchor bidding is opening on 30th. Issue is closing on the 4th of August. Issue structure, QIB, it's a book building process issue. So QIB is about 11,61,600 shares. And market maker is going to take about 1,23,000, and the rest will be distributed amongst HNI and retail shareholders. The pre-issue shareholding of the promoters is about 39%, and post-issue it will happen to be 61% for the public. Listing is on the August 7, 2026. The issue intermediaries, so the book running lead manager is Narnolia Financials, market maker is PESB, banker to the company and issue is Axis Bank, registrar is Ma Sheetla, legal advisor is Veena Jayasinghani, branding partner is Branding Edge, statutory auditor is AVH and Company LLP, and the event is powered by S45. Offline revenue currently contributes to somewhere around 24%, and our online revenue contributes to 76%. And debt level. Hello. Yeah. So, sir, basically we have around 3.7 crore of debt on books today, out of which 2.35 crore is something that we are repaying, and rest we can manage from our own internal accruals. So we'll be clearing. So the idea here is to have a debt-free books. Okay, and there are ample opportunities for the growth, but at the same time, there is competition also. So, what is the market situation currently? I think it's a very good question. Basically, yes, there is a healthy competition, but it is, every company has its own approach. So when we talk about classroom, because we have spent almost 2 decades in education, we have formed a model where we focus on reducing the customer acquisition cost. Not only work outside the system, which is after schooling. If you have seen a lot of our pictures, we are working within the system as well, and that is very, very important. The cost optimization and getting the student engagement should not be a burden to the company. It should naturally come, and that is what we believe in. So, yeah, that was one point. Do you want to add any other point? Yeah, I think. So basically, if I remember, मैं 6,000 रुपया लगा के CS बना था, और अभी 6,000 रुपया महीना का देता हूँ अपना बेटा का नर्सरी क्लास के लिए, राइट? सो एंड आप कोई भी AI कोर्स करने जाते हो, अभी
people take 18,000, 34,000, and that is for a specific course. The beauty about Classroom is at 1250 subscription for a year, you are getting 3,300 hours of committed content, very, very exclusively made for teaching students all across. That is the beauty about this model. I have seen the model grow. So when we last looked at, we were like at 3 lakh, then it went to 4 lakh. Today we have 6 lakh registered, people who have been subscribers to us, and they are benefiting, and that is why you are seeing humongous growth in ROI. In fact, if you look at, I have checked this company, the ROI is still going to increase in the next 3 years. There is no, because of the beauty of the model again. And this is affordable, available at 1250 rupees a year subscription. Revenue growth, and has it plateaued out, or are we expecting the same kind of growth over the next few quarters, or is it a one-time event? So yeah, I'll talk something about the past, like you said. I think it's a fantastic example of investing before the curve, right? We have invested I'll just take you like 2-3 years back. We started investing in technology and the content, right? That is that we started building up a product, we started building the content, and that's where you see the investment going in. When you start getting results, and specifically that happened from last 2 years, when you start getting results, we optimized the cost factor, we ensured the investment which we have done over 2 years is now giving the results. So, as I said, it's a fantastic example of investing before the curve. We invested, and you see there is a results which is coming. The management can't talk about future numbers, but so basically, if you look at a company like Airtel, right? So these are companies which entered into. These are not geometrical growth. So these are not arithmetical growth companies. These are geometrical growth companies. When you look at Classroom, we are in a similar stage wherein we are talking that we are in a geometrical growth company, because if you look at बच्चे तो कितने ही पैदा होते हैं इंडिया में, 45 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ तो बच्चे एक साल में पैदा होते हैं. सो दे बिकम योर रेगुलर कस्टमर. 10 साल का जर्नी है. इफ दे बिकम सो लाइक 45 करोड़ तो आपके ऐसे ही स्टूडेंट्स हो जाते हैं. एंड वेयर वी आर एट 6 lakhs टुडे. एंड कौन हमारे जैसा कोर्स दे रहा है? तो with this money that comes in, they will be able to reach out to a lot many people more. And then you will see growth only. I don't think so anybody is giving this kind of quality education in such a concise format, in such a valuable price. And it's not only for students. Today you want to learn AI ML, go put in 1250, you will have that course, and I'm sure you will benefit out of it. So it's for this actually Classroom model works for 5-year to 35-year. And also to a 52-year-old for like me who still wants to learn. Because today if you look at पहले क्या था, आप कुछ एजुकेशन करते थे, वो एजुकेशन आपको 25 साल के लिए वैल्यूएबल था. 10 साल पहले वो 5 साल के लिए वैल्यूएबल था. As today you do something, it is valuable for you for the next 2 years. If you don't keep upgrading yourself, you are out of the system. So you need such kind of platforms to keep upgrading yourself. The other we have multiple segments where we get revenue from. The first topmost segment is our B2B, which are our enterprise and institutional clients. We get a revenue of somewhere around 45% from our B2B clients. Around 30% of our revenue comes from our channel partners and the government projects which we do. Around 22% of the revenue comes directly from B2C, it's a direct customer who subscribes it, and 3% of the revenue comes from our foundation partners, NGO partners, the impact partners which we work with, and the distributors. सर मेरा सवाल हिंदी थी. बड़े पैमाने पर उनका भी IPO लॉन्च हुआ, क्या स्थिति है उनकी ये सभी जानते हैं. बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो उनसे क्या आप अलग दे रहे हैं इसे, और किस तरह से लोग विश्वास करेंगे?
सर मैं एक्चुअली किसी और कंप्यूटर के साथ आज नाम लेके कंपेयर नहीं करना चाहूँगा बिकॉज एक क्लासरूम की जर्नी है. सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, बट मैं उसके पीछे का कंसर्न समझ सकता हूँ, तो मैं उसको एड्रेस करूँगा. सो बेसिकली हमने जो ये सिस्टम बनाया, हम मानते हैं कि सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के अंदर भी रह के सुधारना पड़ेगा. तो ये हमारा अप्रोच था कि एक तो आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग जो बोलते हैं वो तो हमारा पहले से ही हमारा प्रोफेशन था. जब हम मैम ने आदेश्वर एकेडमी जो हमारा लोकल कोचिंग क्लासेस है शुरू किया, बट कोविड बहुत बड़ा आई ओपनर था जब हमको पता चला कि सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर बच्चे दो टाइम स्पेंड करते हैं. वन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडस्ट्रियल स्किलिंग. आज क्या है कि बच्चे ग्रेजुएट होते हैं बट इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए रहता है, तो इसमें बहुत बड़ा गैप है और हमने भी वो फेस किया है. तो हमारे ज़माने में क्या होता था कि ट्रेनिंग हो जाती थी, बट आज इंडस्ट्री हैज़ अ लिटिल पेशेंस एंड एडेप्टेशन टू दैट. सो इसके थ्रू इंडस्ट्रियल स्किल लेके अंदर जाए. तो हमने क्या किया कि सिस्टम में रह के उनकी नीड समझी एट स्मॉलर स्केल्स को इम्प्लीमेंट किया और वो सक्सेस होगा. फिर जो सक्सेस फॉर्मूला था वही रेप्लिकेट किया फ्यूचर में. सर इसके साथ में यही प्रश्न है कि आप जो क्लास चला रहे हैं और गवर्नमेंट का कौशल्य करके जो योजना है उसके साथ में भी आपने टाइप किया होगा, मगर यहाँ से जो बच्चे पढ़ के बाहर निकलेंगे कि उनके लिए आपने कुछ जॉब के लिए या कुछ उसके लिए आपने कुछ व्यवस्था रखी है क्या? एक्सेलेंट क्वेश्चन सर. आई थिंक और ये शायद हम अपने प्रेजेंटेशन में मिस कर दी, बट थैंक यू रिमाइंड करने के लिए. सो अब बच्चे जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनको इंडस्ट्रियल स्किलिंग चाहिए, उनको एक लेवल पे लेके जाओ सो दैट कॉर्पोरेट का एडेप्टेशन हो जाए. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. करेक्ट. हमने ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर में हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग. सो इसका मतलब ये है कि बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करो और उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दो ट्रेनिंग के दौरान. एंड दिस इज दी वन एडिशन टू आवर और वन मोर फेदर टू आवर कैप कि हमने जो ऐड किया, इससे जो बच्चे को एक्सपीरियंस मिला ऑन द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, उनसे उनका जो कॉन्फिडेंस था और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स इंक्रीज होती है. उसके 2 रीजन है, बिकॉज एक तो स्किल ट्रेनिंग होती है और दूसरी होती है वाई एक्सिस जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल ट्रेनिंग. तो कॉर्पोरेट में अगर आपको जाना है और काम करना है, आपका खुद का बिजनेस है, सिर्फ स्किल्स से नहीं चलता, या बिहेवियर सिर्फ अच्छा बिहेवियर होकर स्किल्स नहीं है तो भी नहीं चलता है. दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. इस पे फोकस करके हमने स्पेशली डिजाइन किया है ऑन जॉब ट्रेनिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक टू ओनली इंडस्ट्री. इसमें मैं एक छोटा सा कि हम एक समझते हैं बच्चे की जर्नी, जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के इसमें होता है, उसके बाद उसको सिर्फ इंडस्ट्री में जाना होता है. जब वो जॉब लेने जाता है, इंटरव्यू हॉल में बैठता है, तो इंटरव्यूअर उसको 4 क्वेश्चन पूछता है. पहला क्वेश्चन कि डिग्री उनके पास है कि नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, वो जो काम के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास वो रिलेवेंट स्किल्स है कि नहीं. थर्ड क्वेश्चन कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है इस काम करने का. ठीक है. और चौथा क्वेश्चन कि उन्होंने जो काम किया है उसका कोई ऑथेंटिसिटी या सर्टिफिकेशन है कि नहीं. आई एम श्योर जब हम जॉब लेने जाते हैं तो यही 4 क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर पूछता है. उसकी बेसिस पे उनका डिसीजन होता है कि इन कैंडिडेट को उनको रिक्रूट करना है कि नहीं. अब पहला जो चीज़ है, जो डिग्री मिलना, वो तो उनको यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मिल जाती है. बाकी की जो 3 चीज़ें हैं, एक हो गया स्किल, सेकेंड हो गया एक्सपीरियंस और थर्ड हो गया उनका सर्टिफिकेशन, जो उनकी ऑथेंटिसिटी की उन्होंने एक पर्टिकुलर स्किल या पर्टिकुलर एक्सपीरियंस किया. ये जो 3 चीज़ें हैं वो हम सॉल्व करते हैं हमारे ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जो हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और हम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रन करते हैं. जब हम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को डिग्री के साथ अगर हम ये 3 रेलेवेंट चीज़ें मिल जाती है तो उनके लिए इंडस्ट्री में जॉब मिलना या एक अच्छे प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग मिलनी वो बहुत ज़रूरी है. और ये पूरे ट्रेनिंग के दौरान हम ये इंश्योर करते हैं कि उनको एक रियल प्रोजेक्ट्स मिले, रियल वर्ल्ड में वो काम करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उनको बिहेवियरल से लेकर उनके काम कैसे करना है वो ट्रेन किया जाता है. तो सर हमारा काफ़ी एफर्ट्स इस चीज़ में लगा है और हम पिछले 1 साल से इस काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे हम इस जगह पे काम कर चुके हैं सर. तो मेरा नाम ध्रुव जवेरी है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अपस्किलिंग क्लासरूम हूँ. और बेसिकली
ये हमारी माता जी है. शी हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 40 लॉन्ग ईयर्स जैसे कहा था. और दुमिल जो मेरे भाई है वो भी एजुकेशन इंडस्ट्री में 18 ईयर्स से है. सो जैसे ये कहा, ये 10 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग 10 साल रहा था, बिकॉज इसमें 3 एरा थे, एक एरा नहीं थे. जैसे मैंने कहा था, प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड. और यहाँ तीन एरा में जो ज़रूरत है एजुकेशन को सिस्टम और बच्चों के लिए, वो काफ़ी चेंज हो चुकी है. सो हमको हमारा जो मॉडल था एजुकेशन डिलीवरी का, वो भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ा. और बढ़ते हुए नीड के हिसाब से हम एक खुशी से कह सकते हैं कि आज हमने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया है जो लाखों बच्चे यूज़ कर सकते हैं. You also talk about skills, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन की डिग्रीज इम्पोर्टेंट नहीं, साथ ही साथ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि आप जब पढ़ाई करके निकलते हैं तो सामने जब जॉब्स आते हैं, दे नीड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, और वहाँ पे वो कट शॉर्ट हो जाता है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम. उस बारे में बताइए किस तरह से आपने उसको अपडेट किया है आपने. जी, तो जैसे मैंने वो चीज़ हाईलाइट करी थी कि मेरा नाम दुमिल जवेरी है. आई एम अ CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एट फ्यूजन क्लासरूम एडुटेक लिमिटेड. जैसे हमने हाईलाइट करी थी कि जब एक स्टूडेंट या एक लर्नर अगर एक इंटरव्यू हॉल में जाता है तो इंटरव्यूअर उसको 4 क्वेश्चंस पूछता है, राइट. तो पहला क्वेश्चन होता है कि उनके पास कौन सी डिग्री है. सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि उनके पास जो जॉब प्रोफाइल के लिए उनके पास कोई रेलेवेंट स्किल्स है कि नहीं. तीसरी चीज़ जो उनको पूछते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको काम करने का. और चौथी चीज़ होती है जो उनको पूछते हैं कि आपके पास कोई वैलिडेशन या सर्टिफिकेशन है जहां आपने कोई रेलेवेंट स्किल्स किया, राइट. तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिग्री के अलावा. तो जो 3 चीज़ें आ जाती है डिग्री के बाद, जो होती है आपके स्किल्स, उसका सर्टिफिकेशन और उसके साथ उसका एक्सपीरियंस, राइट. तो हमारा जो प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में हम ये तीनों चीज़ कवर कर लेते हैं, जहाँ पे हम उनको रेलेवेंट स्किल्स देते हैं, एक्सपीरियंस टू वर्क विद अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, और साथ में हम उनको एक सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसकी वजह से उनको एक उनके डोर्स और भी ओपन अप हो जाते हैं फॉर गेटिंग द रेलेवेंट एंड द बेस्ट जॉब विच दे डिजर्व. अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, 10 साल में इस तरह की ग्रोथ हुई है. एंड जैसे कि आप लोग कुछ ईयरली 1,250 रुपीज़ में ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सेज वगैरह 100+. टेल अस अबाउट दैट. तो लास्ट ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ जर्नी स्पेसिफिक रही है. बट लास्ट 2 से 3 सालों में जो हमने ग्रोथ किया है वो 2.3x का ग्रोथ हमने किया हुआ है. अबाउट द IPO जो है उस बारे में आप थोड़ा सा पब्लिक को बता सकते. जी. तो क्लासरूम ने जब हम 2016 से लेके अभी तक जो हमने किया, राइट, 10 साल में, तो दिस वी फेल्ट इट वाज अ राइट टाइम कि हम एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट और एक ट्रांसपेरेंस इकोसिस्टम और गवर्नेंस से हम आगे बढ़े, ठीक है. और इसका जो भी एडवांटेज है वो सारे स्टेक होल्डर्स को मिले हमारे साथ. इट वुड बी पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे स्टूडेंट्स. सो वो स्पेसिफिक चीज़ें थी. और ऑफ कोर्स इट वाज अ टाइम वेयर वी नीडेड अ परमानेंट ग्रोथ कैपिटल, जिससे हम हमारे काम को काफ़ी एक्सेलरेट कर दें और हमारा जो विजन है वी रीच क्लोजर टू आवर विजन विच वी वांट टू अचीव. Lastly, ma'am, we want something from your side. Speak something about this growth. मैंने आदेश्वर एकेडमी 2007 में मैंने स्टार्ट किया था. तभी तो बच्चे, ये तो हमारा बच्चे पढ़ रहे थे दोनों, और इनका तो फॉरेन में उनकी तो जॉब थी. तो इसके बारे में फिर बाद में उनको प्लेस में मिला, तो इसने भी इंटरेस्ट किया. 5 बच्चे से 300 बच्चे हमारे हो गए बच्चे को. और इसके बाद हम लोग ने सोचा वी डू समथिंग न्यू. तो अभी दोनों बच्चे बोले, हाँ, मैं दोनों बच्चों का बोले कि हम लोग भी जॉइंट हो रहे हैं तो हमें और कुछ करना चाहिए. सो हम लोग ने 2016 में हम लोग ने क्लासरूम, वी स्टार्टेड क्लासरूम. इसके बाद फिर हम लोग में हमारी जर्नी बढ़ती गई. अफोर्डेबल, एक्सेसिबिलिटी और सब बच्चों को जितना दे सकते हैं हम लोग दे सकेंगे. तो कोविड में हम लोग को थोड़ा सिचुएशन मालूम पड़ा कि बच्चे इतना पेमेंट नहीं कर रहे कोई, तो हम लोग ने बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबल कर दिया कि इससे क्या है ना, रिकग्नाइज भी मालूम पड़ा सबको. तो इसी हिसाब से हमारी जर्नी हमें ऑनलाइन से भी स्टार्ट हो गई. मैम का एक्चुअली मैं एक ऐड करना चाहूँगा. मैम का एक ये था कि हमेशा से कहते थे कि एजुकेशन के लिए प्राइस टैग जो है वो कंसर्निंग नहीं होना चाहिए. सो इन वॉट एवर फॉर्मेट वी टीच, अगर वो ऑफलाइन हो या OTT के थ्रू हो जो ऑनलाइन है, ऐसा मॉडल और ऐसा प्राइस बैंड हो कि बच्चे 2 बार सोचें नहीं बेसिकली. और इसलिए आप 1250 का अगर आप सोचोगे मॉडेस्ट प्राइसिंग फॉर द एंटायर ईयर, इनके
आप मानोगे नहीं कि इन्होंने बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है सो दैट अफोर्डेबल रीचेज माइंड एंड इट्स नॉट ओनली द मॉरल सपोर्ट बट शी हैज़ ऑल्सो ट्रैवल्ड एंड जगह जगह पे कोने कोने पे गए हैं सो दैट टू मेक श्योर दैट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज डन। और मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में, ये हमारे रोल मॉडल रह चुके हैं। तो जब उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो बहुत डीप एक्सपीरियंस था एजुकेशन में। अगर आप देखोगे इस चीज़ को तो मतलब अगर हम बताएं कि वो हमारी जो जर्नी है वो 10 साल की नहीं, इनकी तो 40 साल से वो जर्नी स्टार्ट हो गई है और आज हम यहाँ पर है। तो जो 40 साल उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने हमें दिया और उसके बाद उनका एक विज़न था और एक मिशन था कि इंडिया के एवरी कॉर्नर एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स क्वालिटी एजुकेशन और हमें वो एजुकेशन वो घर घर तक पहुँचाना है। वो बच्चे जो उनको वो बनना चाहे, जैसे वो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या फॉर एन एग्जांपल अगर वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, उनको जो रेलेवेंट उनके डिजर्विंग ये चीज़ है उनको वो प्राइज़ में मिलनी चाहिए जहाँ की वो पढ़ सके और वो चीज़ों को अचीव कर सके। क्योंकि अगर आप हमारा कस्टमर बेस भी देखोगे, स्टूडेंट्स भी देखोगे, आज पैन इंडिया है, तो हर स्टूडेंट अपने घर पर बैठकर ऑन डिमांड वो स्ट्रीम कर सकता है, बच्चा पढ़ाई कर सकता है, उसको नॉलेज ले सकता है। और वो खुशी आपको तब मिलती है जब बच्चे आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि कोई बच्चा सीए बन गया, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, कोई बच्चा इंजीनियर बना है, कोई बच्चा को बहुत बड़े कंपनी में एक जॉब मिली है। तो वो जो हैप्पीनेस है बच्चों की जो रिफ्लेक्ट होती है, वो जो जर्नी हमने देखी है, दैट कीप्स ऑन मोटिवेटिंग अस कि हम बच्चों के लिए और क्या करें। क्योंकि आज जो बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है या बच्चे जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जुड़ते हैं। एजुकेशन में ये चीज़ है, अगर बच्चों ने आपके साथ एक बार आपके साथ जुड़ गए तो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वही आपको एक मेंटर समझते हैं। एंड एज अ मेंटर, एज एन एजुकेटर हम समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दें, राइट करियर अपॉर्चुनिटीज़ दें। क्योंकि हमने बहुत सारे करियर सेशंस भी लिए हुए हैं, तो करियर सेशन में हमारा एक ही ये रहता है कि हम जो बच्चे को हम सही दिशा दे दें, एक सही गोल पोस्ट दे दें ताकि बच्चे की डायरेक्शन सॉल्व हो जाए। और जब वो बच्चा वो डायरेक्शन लेता है और ईयर्स के बाद जो हमारे पास आता है एक स्वीट का बॉक्स लेकर और बोलता है कि सर आज मैं आज मैंने ये अचीव कर दी और अपने हमारी पूरी फैमिली को अपलिफ्ट कर ली, तो दैट गिव्स अस शेयर हैप्पीनेस। एंड सो दैट वाज हर विजन व्हिच ऑफ कोर्स वी ऑल आर टेकिंग फॉरवर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। Just about how many centers are there in Mumbai, Maharashtra? Sure. So हमारे पास अभी 30 पार्टनर सेंटर्स है जहाँ हम जिनके साथ पार्टनरशिप मॉडल में वर्क करते हैं सर, ऑफलाइन बेसिस पे। What is the opening price band of the IPO and when will it open? Sure, I think so basically the price band is 150 to 159. 151 to 159. When will it open? So it's opening. The anchor book is opening on 30th, and we are closing the issue on 4th of August.